Give it up for Gaurav. कहते हैं हिंदी फिल्में अच्छे संगीत से बनती हैं और जब संगीत अच्छा हो दिलों तक पहुंचता है और लोग फिर आपकी फिल्म को भी पसंद करते हैं। हमारी बड़ी कोशिश है कि एक अलग किस्म का म्यूजिक जो मेलोडियस है, जहाँ की शब्दों का कोई मायने है, जहाँ जज्बात मायने रखते हैं, उस किस्म का म्यूजिक हमने लिया। गौरव, क्विक वर्ड फ्रॉम यू। इसलिए कहना चाहूँगा कि किसी भी फिल्म के म्यूजिक में उस फिल्म के डायरेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। It's been a team effort right from Shekhar ji, Diana, all the actors, our lyricists, Seema Saini, Arafat bhai, all the musicians, engineers, programmers, सभी ने बहुत मेहनत से काम किया है and we are all very very confident कि जब भी इस फिल्म का म्यूजिक आएगा they will be chartbusters, all the songs will be chartbusters। आने से पहले सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता था कि एक ग्लोरियस 24 साल की क्रिकेटिंग करियर के बाद जब सचिन ने कहा कि अब मुझे रिटायरमेंट लेंगे, तो और मसरूफ हो गए और पॉपुलर हो गए और लोग इनके पीछे भागने लगे। भगवान ऐसी रिटायरमेंट सबको दे। लेकिन एक आनंद फिल्म आई थी जिसकी आखिर में एक लाइन ऋषिदा ने कहा था कि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। उसी तरह अगर आप मुझसे सचिन के बारे में पूछें तो मैं कहूँगा सचिन रिटायर नहीं हुए, सचिन कभी रिटायर नहीं हुए। इतना सब कुछ बोलने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। A big congratulations to you and your team for this wonderful movie, and I'm looking forward to the launch of this movie, which I believe is going to be in February. And today on this occasion you're launching the music album, and I got just met Gaurav and your team perform, so I hope you achieve all the kind of success, and this is obviously the beginning of your career. I'm sure you've got your heroes in life. I would expect that you would want to follow their footsteps and entertain all of us. I have been a huge fan of music, right from the age of 10, 12 when I started understanding music. I started liking songs and I would play those tracks every now and then. Right from Lata Devi, Asha Ji, Kishore Kumar, Mohammed Rafi to today's generation, all the top singers, I've enjoyed their music. Music has traveled with me, whether it was Australia, West Indies, South Africa, New Zealand, or from Bangalore to Wankhede Stadium while driving. Music has been a constant companion, and once we hear the songs of this particular movie, I would like to listen to those songs as frequently as possible. I know you do a great job. For me to be here, there is one reason, which is when I got to know that Shekhar has dedicated this movie to his son Ayush, and it is a coincidence that Ayush lost his life in 1994 to a heart disease. And I was talking to very senior pediatrician, Dr. Ambekar, who's working with Nadia Hospital. He is going to retire in 2015. I thought this was the best platform to just let you know what we are planning to do, because it is about heart, and this movie is all heartless, and I thought this was the ideal platform just to bring you notice what Dr. Ambekar is trying to do. He will be retiring in 2015, and before that in Nadia Hospital. He told me that there are a number of children who die because of heart diseases, only because there are inadequate facilities, and sometimes they cannot afford to pay for the surgery. It is shattering to
that today's day and age, we don't have adequate facilities. Along with Dr. Ambedkar's team, I have joined to raise funds and to raise awareness about these complex cardiac pediatric surgeries. Because doctors don't have adequate facilities, they are not able to perform the surgeries and save lives. Though this movie is called Heartless, on this platform I would like to say that let us have a big heart in supporting this cause. Let's donate generously. And let's make a heartful effort to save lives. I think it is really, really important, and I would like to believe that Shekhar, with his entire team and everyone present in this room, including the media, that becomes our responsibility to support this cause so that we can save more lives and have more smiling faces around. Once again, thank you very much for having me here. And this occasion is really special, so I wish you all the very best. Thank you. To Adya as well. जी, thank you. May have a good time. ये मैंने इनको बताया था बहुत संक्षिप्त में जिस फिल्म में dedicated to late son Ayush Suman, whom we lost to an incurable heart treatment called EMF, which is one of the rarest diseases in the world. And I lost faith in God, and I often looked up and I said, why me? Why did He choose me? Because this disease happened to 1 out of a billion kids, but it happened to me. It shouldn't happen to anybody. Because this disease happened to 1 out of a billion kids, but it happened to me. It shouldn't happen to anybody, for that matter. Shouldn't. And my father was one of the greatest doctors, greatest surgeons, and the biggest irony of his life that he saved many lives, but he couldn't save his own grandson. और तब मैं सोचा करता था कि मैं तो उस जगह हूँ जहाँ मैं अपने बेटे को बचा सकता था, फिर भी नहीं बचा पाया। और उन लोगों का जो आर्थिक रूप से उस जगह नहीं है जहाँ वो अपने बेटे की या बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, उनका क्या जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हर जगह हर रोज हम लोगों को सुनने मिलते हैं जो हृदय की बीमारी से गुजर जाते हैं। तो मैंने अहद किया जब ये फिल्म तो हर लोग बनाते हैं और फिल्में बनती रहनी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी एक प्राइम कंसर्न है, लेकिन अगर उसमें कोई एक ऐसी चीज जो समाज के लिए नहीं है तो वो फिल्म अर्थहीन है, डजंट मीन एनीथिंग। इसलिए मैंने ये अहद किया कि ये फिल्म न सिर्फ आयुष के नाम पर होगा, लेकिन इसका जो आर्थिक लाभ है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की तरफ जाएगा। हॉस्पिटल को हम सब डोनेट करना चाहेंगे, न सिर्फ इस फिल्म के जरिए बल्कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो उसका एक बड़ा हिस्सा या सारा हिस्सा जो है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की तरफ जाएगा। और इसकी पहल सचिन ने की है, इससे बेहतर पहल हो नहीं सकती। और जब 2 दिल एक ऐसी बात सोचते हैं तो सारे दिल उस दिल से जुड़ जाते हैं।